Assalamualaikum students, I am teacher Romasa and we are going to study a biology lecture and we are going to start our section number 3 of your biology book. And in your section number 3 you have chapter number 8 and 9. Chapter number 8 is nutrition. So first of all, I have written the points that we are going to discuss in the lecture. The first one, we will discuss about the nutrition. What is nutrition? Anything that we eat is called nutrition. हर वो चीज़ जो हम खाते हैं, this is called nutrition. Now firstly think, why do we eat? हम खाते क्यों हैं? ठीक है? The answer would be, मेरे according answer है, the answer would be to get some energy, to do the perform the activities. So the main thing is, the purpose of the nutrition is to get energy. But how we can get this energy and what this nutrition actually stands or means. So for this we have to discuss example. For example, consider you have taken an egg. Okay, egg is actually made up of protein. When you eat egg, it will undergo digestion. यानी अंडा खाया and that egg is going to digest. And protein, in chapter number 6 you have studied all enzymes are proteins that are made up of amino acids. So proteins are ultimately going to be broken down in amino acids. True. So from here we have two things. We have amino acids. We have first main purpose of the nutrition was to get energy. So the first thing is we can take energy from that amino acids, and secondly we can make our body proteins by using these amino acids. Clear? अंडे को खाने से हमें क्या मिला? अमाइनो एसिड्स को यूज़ करते हुए हम एनर्जी ले सकते हैं. एंड सेकेंडली व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक आवर बॉडी प्रोटीन्स और अदर बॉडी सब्सटेंसेस. So what is nutrition? The process in which food is obtained or prepared, absorbed and converted into the body substances for growth and energy is called nutrition. आपकी बुक पे डेफिनेशन है. दिस इज़ द डेफिनेशन इन योर बुक. द प्रोसेस इन विच द फूड इज़ ऑब्टेन्ड और प्रिपेयर्ड, कि हमने क्या किया, खाना खाया, एब्जॉर्ब्ड, उसकी डायरेक्शन की है, उसको तोड़ा है, उसको बॉडी में एब्जॉर्ब किया एंड कन्वर्टेड इनटू द बॉडी सब्सटेंसेस. हमने कहा था अमाइनो एसिड को ब्रेक करके हम बॉडी के सब्सटेंसेस बनाएंगे फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी. और उसको बनाने के बाद अमाइनो एसिड से हम क्या ले सकते थे, एनर्जी बना सकते थे और अदर बॉडी प्रोटीन्स बनाएंगे तो वो इट विल बिलोंग्स टू द ग्रोथ. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. सो द नेक्स्ट टर्म इज न्यूट्रिएंट्स. सो व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? The thing that you have eaten is made up of something. For example, egg खाया है, वो प्रोटीन है. bread खाई है, that is actually the carbohydrates. You have eaten the rice, again carbohydrates. So anything that you eat or the thing that you eat is made up of something, and this thing is called the nutrients. वो carbohydrates, वो proteins, वो पोटैटो दैट इज़ मेड अप ऑफ स्टार्च, वो सारे के सारे आपके पास क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स. अल्टीमेटली न्यूट्रिएंट्स बॉडी में डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस करवा रहे हैं. सो व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स अकॉर्डिंग टू योर बुक? द न्यूट्रिएंट्स आर द एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड दैट एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूजेस फॉर एनर्जी. प्रोटीन खाई है, बॉडी ने ऑब्टेन किया है, ऑर्गेनिज्म ने लिया है, उसको खाया है, उसको एनर्जी के लिए यूज़ किया, एंड द सिंथेसिस ऑफ द न्यू मटेरियल्स, और बॉडी की प्रोटीन्स बनाने के लिए उसको यूज़ किया. सो दैट प्रोटीन्स इज एक्चुअली इज़ कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. और इस प्रोसेस को जिसमें हम ये सारा काम कर रहे हैं, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन. होप यू आर ऑल क्लियर विद दीज टर्म्स. न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस एंड द न्यूट्रिएंट्स आर द components or the elements that we have taken from the food. Okay, the next we have the term autotrophic and heterotrophic organisms. So you're all well aware of
Trophic, those organisms which can prepare their own food, and heterotrophic, which cannot prepare their own food. For example, autotrophic example, simple plants, and heterotrophic example hogi, we have humans. We are humans, we are heterotrophs. Okay. So before starting our fourth point, that is difference between the micro and the macronutrients, uh, just clear that your chapter number 8 is divided into the two major portions, plants and animals. So firstly we'll discuss the mineral nutrition in plants. In your book you have the heading that is called mineral nutrition in plants. We are going to start it. So firstly, for example, we are the humans, we need different things. We need carbohydrates, we need proteins, we need fatty acids, lipids, vitamins. We need all these nutrients to grow or to obtain energy or to do all the activities of human or life. Similar like plants grow in the soil. So plants को भी कुछ ना कुछ चीज़ें required हैं for their growth. So these things are called nutrients. Fine. वो चीज़ें जो प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए, दे आर कॉल्ड मिनरल्स इन द केस ऑफ द प्लांट्स. ठीक है. सो मैक्रो जो कि प्लांट्स को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, माइक्रो विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन लेसर क्वांटिटी, जो कि प्लांट को कम क्वांटिटी में चाहिए. सो दे आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. फॉर एग्जांपल ह्यूमन की एग्जांपल लेते हैं. ह्यूमन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट है दैट बॉडी रिक्वायर्ड मैक्सिमम. इसीलिए हम सबसे ज़्यादा ब्रेड यूज़ कर रहे हैं. वी यूज़ राइस, वी यूज़ पोटैटोज़. दे ऑल कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स. बट हर पर्सन जो है वो आयरन के सप्लीमेंट्स यूज़ नहीं करता. आयरन हर ह्यूमन को रिक्वायर्ड नहीं है. रिक्वायर्ड है बट इन अ वेरी लेसर क्वांटिटी. जिसमें डेफिशिएंसी होगी सिर्फ वही आयरन के सप्लीमेंट्स को यूज़ करेगा, अदरवाइज़ नहीं यूज़ करेगा. सो दैट आयरन सप्लीमेंट इज़ अ माइक्रोन्यूट्रिएंट and that carbohydrate is actually the macronutrient. So what is the definition in your book is the nutrients which are required in large quantities are called macronutrients. For example, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, magnesium and potassium. Similarly, the nutrients which are required in small quantities are called micronutrients. For example, iron, molybdenum, boron, chlorine, zinc, etc. You don't have to learn all the examples. You just can learn just one or two example as you wish. Okay. So what is the homework? That you have to learn all the definitions: nutrition, nutrients, autotrophic versus heterotrophic organism, and micro and macronutrients. Hope you all have cleared the concept of nutrition, and if you have any queries you can ask me. Okay, thank you.